The Dean of Academics, Professor Dr. Shabadan Saha, sir. The Dean of Administration, Mr. Shubhitra Chaki, sir. The Dean of Research and Placements, Professor Dr. Prashanjit Chatterjee, sir. And the Dean of Student Affairs, Professor Dr. Arun Kumar Jain, sir. And along with that, our trustee, sir, Kumar Kejriwal, sir, and our CEO, Professor Dr. Parthashat Chakravarti, sir. Thank you for the constant support and guiding DGOC and CAVI on its path. Now, I would like to request our DGOC sir to please come to the podium for the inaugural speech of our event. Respected trustee sir, CEO sir, respected speakers, and my dear friend, my dear students. Of course, it has been a long journey because since 2020 or 21, I should say that there were many proposals of starting this GDGOC Google Developers Group. But after 3 years of continuous time, I think follow-up batch also tried their best to start their GDGOC program. But we ultimately got the success with this particular batch, that is 2027 passing out batch. Now this so coming down to this Google Developers Group, it really gives me immense pleasure to see that continuous speech, continuous talks, continuous expert talks are being organized for the current fourth semester and students, so that they and it is being organized by the current sixth semester students for their juniors.
So if this culture persists, on certain technologies may not be there in the syllabus, but you have to learn of their own. See, very frankly speaking, getting 90% or 9%, 90%, 95% really does not matter much in the technology markets. If you know the technology, you will survive. If you don't know the technology, you will not survive. Perhaps I have said that many a times earlier, and I repeat the same. Okay. So uh, basically, technology companies work on certain issues, and I would like to request all the students to go through or make a current fourth semester, get a very good score in the hacker rank, have a good LinkedIn profile because companies are looking for it. At the same time, uh, have a very good GitHub storage and GitHub have a good repository in the GitHub. That is, you have done something new. Okay, that's what all the companies are wanting. At the same time, the technologies are changing. Don't think that whatever we have kept in the syllabus in the sixth semester, say we have kept AWS, that is enough. I finish all the experiments. I get a O. That's enough for me to get a job. No, those days are over. Some of the technologies yesterday that companies were focusing on were Docker and Kubernetes. Cloud is going to survive in the market. Generative AI is taking on hugely. Okay, so all these technologies cannot be kept in the 4 year syllabus. And there is a trend that what I am looking at is that you are having a passion of going for internship in IITs and NITs, thinking that all will be doing research. That's not possible. That's not possible, neither that is feasible. So ultimately, if all starts giving it, all starts, I am not discouraging anyone, but if all goes for higher studies, who will be earning the money? I don't know. Okay. So the thing is that doing MTech is good. I am not discouraging you. Doing MTech, PhD is all right. But companies requirement, if you don't satisfy, it becomes very. So in these circumstances, perhaps our speakers will speak more about that. And we have Mr. Kunal Das, who is uh, an expert in the cloud systems. At the same time, he will speak about the AI and the cloud system synchronization. At the same time, we have got our own students, Mr. Anubhab Mukherjee, who is the cyber expert, you can say cybersecurity expert. I know him since third year. Early he was having 35% or 40% attendance, if I remember. So 35 to 40% attendance. Every time I was criticized for allowing him to go for attending all the seminars and all the conferences that were going. Other faculty members used to criticize me a lot that because of my profile, he has been going. He is not মানে ও আর কোনো টিচারকে মানছে না তো সেই প্রশ্রয়টাকে পাওয়া যাচ্ছে আজকে ও কে কি বললো তাতে আমার কিছু এসে যাচ্ছে প্রশ্রয় তো আমি দেবই আমি যদি একটা ছেলের মধ্যে ট্যালেন্ট দেখি আমি প্রশ্রয় দেবো ঠিক আছে তো দ্যাট সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় আমাদের সিনিয়রও
দাদা হিসেবে ও তোমাদের যথেষ্ট গাইডেন্স দিতে পারবে অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি কোথায় যাচ্ছে নাও কারেন্টলি হি ইজ ওয়ার্কিং ইন আন্ডারস্ট্যান্ড one of the major top four IT concern. Or I not say IT concern, it's a consultancy concern. Okay. Like PwC, PricewaterhouseCoopers. Okay. So excellent, excellent. He will be able to explain more. Okay. So whatever you do, see, he was not going into programming. ও আমাকে প্রথম দিন থেকে বলে দিচ্ছিল আমি প্রোগ্রামিং করবো করবো না যার যেটাতে ইচ্ছা আছে সেটা করো সবাইকে সি প্রোগ্রামিং জানতে হবে কোনো মানে নেই সবাইকে পাইথন জানতে হবে জাভা জানতে হবে কিচ্ছু দরকার নেই একটা এরিয়া নিয়ে নাও সেই এরিয়াতে এক্সপার্টাইজ করো যাতে তোমাকে যখন বাউন্সারটা আসে একটা কমফোর্ট মানে অলটা যাতে তুমি সেটাতে বুক করে 6 মান্থ দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ I would now like to welcome our respected CEO sir to the podium to share a few thoughts on today's occasion. Please welcome our CEO sir to the dais. Good morning to all of you on the dais to very young speakers Kunal, Kunal and Anubhab. I welcome them on behalf of the college management and especially the our chairman sir who always encourages this sort of activity, which attracted me the today's event. It takes me back to class 8 physics. Momentum. A mass, whether it's a 1 gram or 1000 ton, no matter, unless it has got velocity. So momentum equal to mass and velocity. So if people are mass, you must have the velocity. The velocity here I connote the desire to learn new things, new skills. 30 to 40 years back, getting 90%, it means people used to come and see your face. Now you see the result of CBSE, ICSE, these state boards. I'm not talking only about West Bengal, but nearby states, Odisha, Bihar, Jharkhand, everybody is getting 90%, 97%. So it's not that scoring high in class 10 will prove that you are very talented. No, not necessarily. Just now, what Abhijit sir has said, I completely endorse with you. It's not the marks. It is something different beyond. I could remember, I attended one of your model exhibition like you were explaining. Is it like that? Pakistan's defense systems how to crack. So that should be. So all of you. It is not necessary always that having very high grade point average, GP I'm talking about, proves that you are excellent in this one. No. You focus yourself to learn something and specialize yourself and become you are the number one. I give you very good example in practical field. 2 years back, I was suffering from some problems of tachycardia. And I have got very inclination towards assessment.
So before I went to a doctor, I thought, let me go and survey 100 cardiologists. I'm talking about a fact. And I got the information, the top rated cardiosurgeons, those who are very, very highly paid, their scoring is much less in MBBS and in MDMS compared to their scorer, and they are unsuccessful at the operation table. I am trying to mean that scoring academically, having good marks, it is something related to a 3 hours luck. You know something, the question came, you attempt it. Is it not true? That 3 hours time, you are in full extreme of energy, you work well, you knew something, but during these 3 hours, somehow you were physically unfit. You had fever, you could not write well. So always scoring of your academic marks is not the maximum proof of your capability. You have got immense energy in you, latent energy, you do not know, explore. What Swamiji Vivekananda said, I like to recollect once again that we human beings do not use our full potential of the brain, only 5%. I would request all of you to try to explore more of your energy. It exists under you, under the mines. Like you discover coal mining, petroleum, diamond mining, gold mining. It is inside you. Explore the mind. Dig it out. Do something new and be like our Kunal and Anubhab and prove yourself that you are something different in your corporate. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. A surprise for you guys. We have a challenge at hand. We are officially launching a special social media challenge where you guys have the chance to capture the best moments from today, insights, speakers, and networking, and share them on your LinkedIn with a picture. Don't forget to tag the group, and the best post will win a special community swag from our side. Now, with permission from the speakers, I would like to call upon Kunal to the stage as he is a renowned voice at forums like Austria and
optimistic view and not boasting, unnecessary things that everything is going well. So something is definitely not in the right space. So I feel very happy that as a student, you guys are getting into this kind of things where you get to listen to many speakers. I'm not a good speaker, but the thing is, in my college days, I had to pay to attend such conferences. So there were many conferences happening in my college. I had to pay like £30, £40, and something like that to attend the conferences. Even if it was happening at my own college, my own conference hall. But yeah, you guys are coming together, discussing something. Even if my talk is total fact, still you get one single idea out of it. That's beneficial. And I hope that the room is full, completely full, not because some credit system. You guys came genuinely out of your passion. So hopefully we have an interaction and have a nice talk. So about me, I work as a developer advocate in the APAC region, almost a decade of experience. And this year has been a really busy. But Devan reached out to me and I said, okay, Kolkata is my hometown. I should definitely interact with the student. I don't get to interact with students much, but this is really nice. And I hope to have a conversation even after the talk also. So today's talk, what I'm going to say is about the AI hype that is going on. And I look back and forth because I just created yesterday this slide while on flight. So this kind of question comes to me often. A lot of students ask me like, okay, I'm solving lead code, I'm solving hacker. Is it really worth it? Even if you like it, still is it really worth it to learn all those binary version, all those stuffs? But before understanding if it's really worth it or not, what I want to say, like, you have to understand how this perception is coming that coding is not required anymore. The first perception is because of the noise that is getting around. So if you see Anthropic, which is like a best coding model out there, Claude, if you guys are aware of it, CEO said that in next 3 to 6 months for the software engineering, AI code writing, it will be done. No one has to know, human has to write this code. But he said that last year, March. So now in 2026, we're sitting and what he preached, what he told is not true definitely, right? Still there are some jobs left. Still people are writing code. He said 3 to 6 months and maximum by 12 months. It's almost like 18 months. Still nothing has been changed. Still people are writing code. And so all these companies, this is recording or not? Not recording, right? You want to be recorded? No, if it's not recorded, I can say something, please. But anyway, it's fine.
So I picked up the five myths that are coming by again research, and then I'll bust them or maybe try to solve the issues that are listening. First is the same thing what all the VC, all the CEOs, all the CFOs are telling that AI will replace humans. This is somewhat true. I won't lie. In my day-to-day job, I used to have a lot more technical writers under me and a lot more designers, UX designers under me. The number definitely got reduced, but it did not vanish at all. There are some who can judge the output of an AI. So there are tools like Google Stage or there are tools like Cloud Design, which can create what a designer should take one day in maybe half an hour. But again, me and team had to sit down and understand, okay, with this color gradient, that design will not look good. With this particular design, it might be good for everyone, but not for my base. So all understandable, or at least a human in the loop, what you call it, the human would, just understand, okay, this is not going well. The AI is giving output, but that is not suitable for my use case. Suppose if I give you an example, you will soon get a job and logging into a something called Provident Fund portal to get paid in India, and also income tax portal. These two websites are very tracks. Every time you open it, almost 90% of the time it is crashing. You want to do something, you want to for get some document, it is crashing. So definitely the user base does not want that, right? This is not the use case. So if you are using AI can build something generic and something which is very rudimentary, elemental. But for your use case, but for your user case, for you are building something that might not be suitable. And if you look at the stat that was published last month, actually the code push in GitHub has increased a lot. Even GitHub was having outages last month. You see the outages page. A lot of time GitHub was down. This is because a lot of code getting pushed into GitHub. So instead of reducing the number of code getting written and number of users writing code, it has increased a lot. Secondly, this I believe clearly. So I have had worked with some prompt engineers, that their code used to look like bunch of strings, just multi-line strings. But this is also getting kind of vanished nowadays. It's evolving so fast. Why I say the new models are very capable of understanding what you are telling. So suppose image generation is very popular, right? Like so time to time this Ghibli studio thing or that girls wearing sari thing was very popular, right? Everyone is creating that. But if you think like that, not everyone has to give the long prompt. Now, if you go into Nano Banana Pro and give a short prompt, one line prompt, it understand what you are trying to do. That's what called prompt modification, prompt enhancement, and it automatically understands. By the time GPT-6 or Claude 5 comes, definitely it does not need you to expand on the views. If I give you some more analogy, I love photography. And sometimes I have to say, okay, make this portrait shoot by a 600 mm zoom shot and then add a aperture 2.8 blur. All those things are fine. This will give you a good result. But more often than not, new models are very capable of understanding. If you give them, I want a zoom shot, I just want a portrait that looks good, background blurry, they will create one for you. So what ends up happening if you look back 2 years old model, they need all the parameters, they need all the boundaries, negative prompt to understand what exactly you are trying to do. But now these are getting extinguished. So prompt engineering also is kind of a you give product managers or non-technical people, they will give you, I want this website to be built. And then some engineers will enhance the prompt at a detailed 128 character length, detailed prompt, and then give it to the model. But that is getting extinguished. So I don't think this is absolutely my views. Definitely someone can differ and happy to discuss more with them, but this is how it is. Secondly, this is another thing that for like I get a lot question about that you have to be an ML AI engineer to understand what is happening to work with AI or get a job in AI. But these are just some examples. I have seen personally, I work day to day with this. So I've been a DevOps engineer for last 8 to 9 years, and I have used AI in my day to day life.
but I don't consider myself as an ML engineer. Even I have trained some data set, whatnot, but that is not my primary job that I did out of passion. But any DevOps engineer want to build something. So DevOps is basically just I'm clarifying because some of you might know. It's basically you write a code, your portfolio, you said, right? And then you deploy it. So others can see it. And then when multiple people start seeing it, it gets slowed down, right? In website, it gets slowed down. So make sure that it scales up accordingly. It's 1,000 or 1 lakh people gets it. So another personal example. So there's a company called Mars. So they build this pedigree Mars chocolate bars. It's very famous in Europe and US also. Bounty chocolate bars. So Mars.com website I deployed in 2022 or 2021. Now in the Black Friday sale, a lot of people they start gifting people, right? Chocolates and all. So their site starts from 1 million to 8 million visitors per hour. So now you have to scale that. And again, if you keep it the infrastructure running as 8 million, when night hits the request starts decreasing, then the cost of 8 million you have to pay, the infrastructure cost of 8 million. So it's up to elasticity, agility that you will scale up and scale down as much as the need. So this is a basic, in a very rudimentary job of a DevOps engineer. So DevOps engineers definitely need to write because the code itself is descriptive in nature, not imperative in nature. So there is logic involved. So they need AI a lot. So they need AI to debug a log. So 1,000 line of log, put it into AI, it fetches down, okay, this particular one line is causing the problem. So all those steps can be done by AI without knowing how to build AI or without knowing how to train a model. Just have to know how to use it. Secondly, right now I work kind of as the intersection of product development and community manager role. So this also needs a personal touch. So I do a lot of this kind of sessions, and I do a lot of product demo. I develop, collect feedback, and then develop those features and go back to the users. So this is also a personal touch. AI can't collect feedback. Or maybe like you are trying to tell me that I got stuck here, so that can't be understood by AI properly because I know deep down under what is happening. And there are a couple of roles like this. But if I tell the moral of the story, it's basically AI has a knowledge base and it understands the knowledge base properly and it can summarize these things for you. It can tell some cool cool analogies and it can teach you that thing very promptly. But if something new comes, you are developing something. Most often than not, the AI does not have the clue about it, what you are building, because the knowledge base is limited. So what happens in product development? I have a structure, I build something, then at last I build documentation, which is not the right way, but 100% of the time that's the way. No one writes the documentation first and then start building. So then the documentation will be fed to an AI. You will understand how this particular API or whatnot works. Then it can provide some suggestions to you. So that's what it is. Wow. Just a minute. Okay. Some technical issue. No worries. So this is another point of view. You will see a lot of YouTube videos or short network real videos that degrees are not worth it anymore. And I get this question from a lot of teachers across different universities like, why this false propaganda is spreading? But honestly, like I say, I work in an AI first company. Still, I would say definitely the thing that I learned in syllabus is I am not working on this anymore. Not a single piece of thing. The discipline, the way to do research, the way to communicate, the depth of it, more of the depth of it I learned. So once you go into a org, you probably learn the breadth of it, the technology breadth, you learn different tech stack, different technology. But the depth of it, you learn when you are starting in the college or something. So that's why I feel the degrees are
uh, good. And secondly, I am not, I did not pass from a tier one college, so I did not have the networking ability, alumni network, whatnot. But that is also a very good thing because at my age and my job, I don't see any job openings in LinkedIn or Naukri. Why I'm saying this, is a double click on that. Have you guys seen any job openings from a CTO role, field CTO role, solution architect role? Probably not, right? So how do they hire new CTOs, new CEOs, or a new architect? It's basically via the networking. So the more you network with people from your college, from this kind of communities, or you're going to some conferences, you network with guys, and that helps a lot. It is very underwhelming aspect and not talked about much. But after a certain point of time, maybe not at your age, you definitely have a lot more opening on all the platforms. But after a certain point of time, like me, I won't find any job that matches my expectation in it. So that's why network, all these things comes in. So this is another common misconception that if you are not using AI, you are falling behind. But think of it as like the same internet analogy. Like people who did not understand internet, they fell behind. And eventually companies like Blockbuster, they used to rent cities and all. So they completely vanished and Netflix took over, same like Spotify took over. So you have to understand it's a tool, it's not a something out of ordinary that you have to learn a new technology, you have to dig deep and understand how the model is built, you have to fine tune your own model. Definitely, if you like that, do it. But more often than not, 90% of the people is just understanding how to use the tool. You are building something, this AI tool is there to help you. You are recording a video, this another tool, Riverside is there to help you. Okay, leave it. You are deploying something, I can deploy the virtual, but I can use the cloud plugin to deploy faster. So all those stuff are there. You have to understand that this is a tool, that how can I use it. So now coming to the point like what algorithms can't actually copy. These are some points that I thought and that I noted down. So first of all, systemic thinking. Now what do I mean by that? Right now the largest context window you have is 1 million token context window, right? Which is huge. But in my company or any other company, when you go and start doing work, suppose you are writing code for a distributed system, microservices, monolithic system, whatever, you will not have idea the whole system of it. For instance, example like Flipkart, Amazon. Flipkart have a card system, so whereby you can add a product on the card. They have a system where they show recommendation. They have a system where they show the generic web page. Then they have a website and an app. So there are a lot of APIs are running behind. They store your data, your addresses somewhere. A lot of things are coming together to work. So it's a very microservices architecture. So microservices are needed. If your address is part is not loading, the DB where the store your address is not loading, still the whole website is functional. More often than not, you are not ordering something, you are just browsing, right? So people who are browsing, they can still browse. So in this kind of scenario, for a AI to understand the holistic view of your whole system and then to suggest something is very hard. Not at today's context. Maybe in future they will understand. Even what I've seen, even if they have the whole scenario or whole product thing, what is happening, still they hallucinate a lot because as a human, when I'm doing something, I have the backbone experience of mine. I know that this should not be happening. It has happened to you, right? You know that okay, this will crash. I know there is no logical explanation behind it. Correct? There might be some you just don't know it, but if I put more stress on it, it will crash. For instance, like if I give you a very blatant example, you know, I know if I run an Android Studio on my Windows laptop, it will crash. It will hang. It will slow down. There's no logical explanation. There is something like your RAM or CPU, but even if you meet the minimum requirement, still it sometimes crashes, right? There is no such explanation, but it happens. It comes from experience. So that's what I know. It can write code if you give him, okay, I know that this card or this say that this DB is not working because the port mapping is wrong, then you can fix it that. But it does not have the holistic view. Secondly, same thing that I was telling. There are a couple of ways. So I use this thing called code wrapping. So when someone new developers comes and pushes code, it
use the quality of the code and gives you a statement or mails you, slacks you, whatever. The problem is when you're working with large team, suppose 10 developers working under me, if I convey the message personally that okay, what you have done is not good, rather than if I say that what you have done is great, but there are some improvement can be done, that actually helps. So when you're working with a large team, I know honesty is not the best policy in those cases. You have to be very not dishonest, but sugarcoat something. So AI is not good in all those stuffs. Still not. Second is taste and judgment. Nowadays, if you open any new website, you'll see violet color, blue color are getting predominant color schemes. Why is that? Because Lovable is mostly trained on websites which are blue and violet. So it ends up making all the websites blue and violet. The recent study, it has been found like 60 to 70% website that has been made in recent last 6 months after Lovable came. It's predominantly blue color, deep black, or violet. So it does not have that taste to understand. So for my website to go liked by millions and millions of people, it has to certain color. There has to something. So the repetition always comes. If you see an article, so I was just one trying to move my Airtel SIM to eSIM, and I opened the first one blog by Airtel. It was like in the era of AI, in the era started like in the era of internet, eSIM is very common. I said no human will write us a statement or blog like that. You see any chat GPT text or any cloud text will mostly understand, okay, this is written by AI. There is no personal touchment. So I personally stopped writing blogs using AI. I wrote two, three, it got good bumps. But the thing is, it does not feel natural, does not feel personal. In the long run, it will not help anyone. Lastly, this is what I have been doing for last 1 years. So I made a huge network by talking with multiple people, similar communities like this. I mostly work in Singapore and Bangalore. So what is this? Basically, I organize a lot of meetup like this. I go and speak a lot of meetups like this with professionals, students, and mix of both. And this is also an in-person thing. I started doing this just to avoid, I got scared also because of AI, and then I thought, let me do this, and eventually that led me got into my job. So this is also one another thing what AI can't copy. Any in-person thing that you see, like today we're discussing something, you're asking me questions, right? This can't be copied by someone else. If a AI is giving you an answer, even if it's better, you will trust the someone who is not an AI. I'll give you a personal example. So I was talking with this Citibank head of DevOps 2 weeks back, and she was telling, even if they had a AI which is more capable than human, in certain use cases they will not AI. Not today, not in 10 years, not in 20 years. Why? Because they can't put a blame if something goes wrong. The fact that a bank, largest bank, perhaps one of the largest banks, Citibank is thinking like this, that in their whole branch, whatever across the globe, they will not trust AI just because they can't put a blame on it. And when you have the certain responsibility that I can't go wrong, you tend to do better work. You tend to test more of what you have written, what you have developed. So that's what the scenario is. Lastly, this has been said a lot. So when you type something on your mobile or computer, the computer predicts the next word, right? So you say I, you predict the next word. Same thing, if you start reading the fundamental papers, that it does the same thing, but it does in a holistic way. It writes a lot. There are some reasoning models, thinking models are there who thinks before writing, but essentially it writes one word at a time and then predicts the next word. So when human talks to each other, when human thinks something, writes something, or maybe it forms a paragraph, then it starts writing. It's not like that. I started saying this sentence and then I'm thinking how to end it. I've already thought in my mind how will I end it, and then I start saying. So there are fundamental differences in that. So now this is just a summarization of what I have told so far. So first of all, for students, what I feel communication is the key, and you have to advertise yourself a lot. So the student who have seen is getting placed in a good company or learning something or doing out of ordinary,
They are not someone who is exceptional coder or not someone who has built something crazy, but someone who has marketed enough that people are knows what this guy is doing. So I think for you guys also, it's just like an advice you can say, you guys should do it. So this is a thing that I present to students, even though I speak with less number of students that contribute to open source project. Don't go to Express.js and just modify on top. That's not how to do it. Check the issues. Go to any large open source project, check the issues, and try to fix an issue. I'll tell you what happens. So you fix the issue by maybe 15, 20 days. If someone else already fixed it and merged it, the issue is closed. That does not matter. After 6 or 7 issue fixing, you'll get the speed will become faster. Eventually, you'll be able to merge one issue in a large repo and you will have the contributor branch. That gives you a lot of pleasure. I tell you that will give you a huge boost in your career. Like some of my friends got job just by closing 5, 6 issues. That's it. But the issues have to be really good. Not something I added a full stop in a sentence that was missing. I added a grammatical mistake. Definitely, that's a way to start. But fix real issues. Issues are listed. You don't have to find issues. It's already listed in GitHub. I think every one of us knows. Just try to fix one mistake. Secondly, after you did that, write a blog post what you learned. Simple blog post in Medium, Dev.to, Hasnote, whatever platform you prefer, write it. Why it's important? It will give you a marketing thing. Like everyone, whoever reads it, knows about it. First of all, no one will read about it, but definitely it's documented. I personally did a few things early in my career. I never documented it. After I faced the same issue 3, 4 years later, I forgot how I fixed it. Then I remember, okay, I had to document it. And because I change jobs so frequent, every 1.5 year, I keep on changing jobs. Which is bad, but anyway. So I forget what do I did in 4 years back in some other org. So that is very important. Whatever you're trying, whatever learning, whatever building, just document it. Secondly, thirdly, attend meetups like this, not to for the swags, not for the food or whatever. Try to network with at least 1 or 2 guys who is better than you in some cases and learn how they're better than you. Ask them questions and that's how you will grow. So there's a sentence like you become the average of 5 people you daily interact with. So try to interact with 5 more intelligent people or more successful people than you, then definitely you will become better. Lastly, build one project that solves real problem. So for instance, I have built one project recently. Maybe I'll post about it later this way so you guys can see. So I keep on forgetting people names. I meet a lot of people, but I keep on forgetting. So I have this meta class, that takes picture. If you're meeting someone, takes picture of them. So I built a project which takes a picture and says like, okay, this person name is XYZ and he does this kind of work. And next time has been embedded. The next time I'm meeting, I have the data of that person. Okay. So that I built still in the beta phase, but more or less with my friends and circle, it's working fine. They give me a WhatsApp notification that you are meeting this guy, he does this. It's a simple facial recognition. It's very simple to do it, but solving my real life problem. So if you are facing some real life problem, you feel there's no solution to it, just build it. And now with the so large contextual model and free models also, it's very easy to build. So this is a thing. This time start building was yesterday and next time after this talk. So I'll encourage you, just go think about a problem that you faced. If you can't think, just take existing problem that others are facing, they are listed in the list of issues and start fixing them. So that's it from my side. I'll be here for some time. And if you guys have any questions, feel free to ask to me. And can we have a Q&A or no? Yeah, we can have a Q&A if someone has any question. Or not, you are shy, you are introvert, no worries. You can just drop me a message on whatever LinkedIn. I'm very active. You can just drop me there. And hope to see you guys soon. Thank you. Thank you for that amazing session. I would request the user to please come forward and give Mr. Kunal Das a token of thanks on our behalf.
Thank you very much. We'll now take a 15-minute break for everyone to refresh up. And this will also give you opportunity to use this time for the social media challenge. Make sure to get your votes if you want to avail the amazing swags that are present for you guys. We'll meet again after 15 minutes. 12:25.
আগে অডিও হয়ে গেল তো। Job হয়ে গেছে।
to bridge the gap that exists between academic learning and the tech industry. Our only intention behind this group and everything that should follow in the coming years is to try to power every student to build systems, innovate, and grow as a part of the global environment. I hope in the upcoming years you guys take forward what we started as a dream. Now, we should take this opportunity to welcome to the stage our second speaker of the day. Our NCKTI alumnus, Mr. Anubhab Mukherjee, is a frequent speaker at NASCOM NASDAQ and ADP Infocom. Today, we are requesting him to present on a walkthrough of cybersecurity. Please join me in welcoming him to the stage. Welcome back to NCKTI. The stage is yours. In a difficult world of the 21st century, where bytes and bits না ওইখান থেকে এই প্রজেক্টর দিয়ে ফোন থেকে ক্যাপচার হচ্ছে ओके पीछे तक आवाज आ रहा है ना बस सुनाई दे रहा है ठीक है स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल हेल्थ सो इसको नॉलेज साइबर सिक्योरिटी के बेसिक के बारे में एनीवन कैन यू रेज योर हैंड बताओ व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी cybersecurity is a protecting environment that actually protects our system organization like for model and everything like for company bugs and vulnerability. and what is offensive security anyone पीछे वाले सुनाई दे रहा है ओके सो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है साइबर सिक्योरिटी का दो पार्ट होता है एक होता है डिफेंस पार्ट एक ऑफेंस पार्ट ऑफेंस पार्ट एक डिफेंस ही है लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहां पे कोई भी सिस्टम है उसको हम फर्स्ट पे हैक करने की कोशिश करते हैं एंड हैक करने के बाद जो जो वल्नरेबिलिटी फाउंड हुआ उसको हम रिपोर्ट करते हैं क्लियर तो अभी मेरे को बताओ कि सभी का तो ये तीन टर्म्स ब्लैक बॉक्स ग्रे बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स कोई बता पाएगा ये क्या है एनीवन एल्स कोई भी बुक में लिखा होगा ना कि ब्लैक बॉक्स क्या है ग्रे बॉक्स क्या है या फिर ब्लैक है ग्रे है व्हाइट है ओके सो लेट मी क्लियर फर्स्ट बुक में जो लिखा होता है ब्लैक बॉक्स ग्रे बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स कंप्लीटली कॉर्पोरेट के साथ वो मैच नहीं करता ठीक है तो ब्लैक बॉक्स क्या है आज जो टॉपिक होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा एंड जो कॉर्पोरेट में काम आता है वही मैं डिस्क्राइब करूंगा ओके तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि कोई वेबसाइट है सपोज पकड़ लो इंस्टीट्यूट तो वो वेबसाइट का सपोज मेरे पास कोई भी क्रेडेंशियल नहीं है मुझे पता नहीं है वेबसाइट किसने बनाया है उसका बैकएंड क्या है कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे को दे दिया भाई तुम इसको हैक करने की कोशिश कर सो दिस इज ब्लैक बॉक्स बेसिक ठीक है ग्रे बॉक्स क्या है लॉगिन करने के बाद भी हमारे पास कुछ फील करता है तो वो पेज सिक्योर है या नहीं है उसको भी चेक करना पड़ता है इसको बोलते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स में सोर्स कोड क्रेडेंशियल एंड एवरीथिंग दे देता है और हम लोग चेक करते हैं कि कोई बग है ठीक है यहाँ तक क्लियर एवरीवन ठीक है तो
आज का टॉपिक है, हम लोग रेड टीमिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, मैलवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो लेटेस्ट एंटीवायरस है विंडोज डिफेंडर उसका बाइपास करेंगे कुछ भी मैलवेयर से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में इसको पता है CIA टैग ओके। सो CIA का 3 पार्ट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ओके, ओके, सो कमिंग बैक, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, बहुत बेसिक से समझेंगे। कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। कॉन्फिडेंशियल इंग्लिश वर्ड आता है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वही सेम चीज है। कोई सिस्टम है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमें चेक करना है, तो उसका उसको सिक्योर करके उसका कॉन्फिडेंशियलिटी जब मेंटेन करेंगे तो वो होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आई गॉट इंटीग्रिटी। कोई गेस कर सकता है इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी और अच्छा तो गेस कर लो। कोई डेटा है, वो सेम ही टाइम पे अवेलेबल है या नहीं। ओके, और इंटीग्रिटी क्या है? सपोज कहीं पे डेटा है, अच्छा एआई के बारे में किसको नॉलेज है? एआई मॉडल ट्रेन करना, हाँ, तो वहां पे डेटा यूज होता है। तो डेटा जब यूज होता है, सपोज किसी ने सपोज कोई हम लोग मॉडल बना रहा है, तो मॉडल क्या करेगा कि सपोज फिशिंग वेबसाइट को डिटेक्ट करे, तो अभी मैंने उसको 100 वेबसाइट का डेटा दे दिया। डेटा देने के बाद उसको ट्रेन किया। अभी अगर वहां पे कोई डेटा गलत हुआ, कोई डेटा टैम्पर्ड हुआ, तो क्या होगा? मॉडल सही से काम नहीं करेगा। राइट, क्लियर हो रहा है? तो वहां पे तो इसको सही से मतलब ये सही से हो, इसको चेक करने के लिए वो है इंडिकेटर। ओके, सो ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, इसके बारे में मैंने बताया। ओके, सो हम लोग अभी जंप करेंगे रेड टीमिंग में। ओके, सो रेड टीमिंग को छोड़ो, एक्सप्लॉइटेशन का क्या क्या स्टेप होता है कोई बता पाए? एनीवन? अच्छा, तो सपोज किसी टारगेट को हमें हैक करना है, सपोज सपोज वो पीसी को हैक करना है। ठीक है, तो हैक करने के लिए हमको क्या पता लगाना पड़ेगा? पहला स्टेप तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ भाई उसको हैक करना है। आईपी एड्रेस, यस, तो आईपी एड्रेस मिला। आईपी एड्रेस मिलने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि उसमें क्या क्या सर्विसेज चल रहा है। ओके, सर्विसेज क्या है, हम लोग रिकॉन करेंगे उसको। ठीक है, तो रिकॉन किया, उसको स्कैन किया, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। उसके बाद सपोज हमें कुछ वर्नरेबिलिटी मिला, ठीक है, सपोज एसएमबी वर्नरेबिलिटी बोल सकते हो या कुछ भी वर्नरेबिलिटी मिला, तो उसको हमने एक्सप्लॉइट किया करके हमको लो लेवल यूजर एक्सेस मिला, दैट इज नोन एज इनिशियल एक्सेस। अभी हमने पहला स्टेप कर लिया, हैक कर लिया, सिस्टम पे आ गए एंड लो लेवल का एक यूजर मिल गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसको प्रिविलेज को बढ़ाना है, मतलब जो लो लेवल यूजर है उसको हाई लेवल यूजर पे कन्वर्ट करना है, जैसे कि एटी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एडमिन। ओके, तो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज पाथ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज है, अभी अगर सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी पता है किसको? एनीवन? अच्छा, तो एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा गूगल कर लेना, वो एक अलग टॉपिक है। तो बेसिकली अगर एक्टिव डायरेक्टरी होगा तो वो क्या होगा, किसी डोमेन से कनेक्ट होगा। मतलब ये जो पीसी है, ये पीसी किसी डोमेन से भी कनेक्ट हो सकता है। तो अगर डोमेन से कनेक्ट होगा तो हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन करके सिर्फ इस सिस्टम का हमको एक्सेस मिलेगा। लेकिन इसका जो मतलब सपोज इस पीसी से वो साइट का दो कनेक्ट है, तो हमको ये इसको कॉम्प्रोमाइज करके लास्ट जो दो पीसी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, वो सारे उसके मतलब इस पीसी के इंटरनल नेटवर्क पे है। समझ आ रहा है या मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ? किसी को समझने में दिक्कत तो मैं रेडियो है। ओके, तो पहला पीसी हैक हुआ लो लेवल यूजर में, उसका मैंने ले लिया एडमिन। अभी चेक करना है उसके जो इंटरनल नेटवर्क है, उसके इंटरनल नेटवर्क पे कौन सा सिस्टम है। तो
तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग इस सिस्टम से मूव करके दूसरे सिस्टम पे जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लैटरल मूव. ओके, लैटरल मूवमेंट. यहाँ पे पीओडी का कॉन्सेप्ट आता है एंड ये बहुत वास्ट टॉपिक है, हम लोग उसका डीप पे नहीं जा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है, ये सब हो गया. उसको सिंपल स्क्रीनशॉट लो, रिपोर्ट बनाओ, क्लाइंट को रिपोर्ट करो. ठीक है. दिस इज द स्टेज जैसे कॉर्पोरेट में एक्चुअल रेटिंग होता है. ये अगर सपोज हम लोग किसी वक्त के इंटरनल जो राउटर है, नेटवर्क है, स्विच पे कर दे रहे हैं, देन इट इज नोन एज इंटरनल रेटिंग. ओके. और अगर हम लोग उसके पब्लिक सपोज सपोज मेरा क्लाइंट है इसके भी आई. ठीक है. उन्होंने मेरे को बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग करना है, डिटेक्टिंग करना है. तो एज अ कंसल्टेंट मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपको इंटरनल टेस्टिंग करवाना है कि एक्सटर्नल. अगर बोलेंगे इंटरनल तो हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे. विजिट करके उनका जो भी लाइक राउटर है, स्विच है, कंप्यूटर है, उनका इंटरनली एक्सेस को गेन करने की या फिर एडी सिस्टम को गेन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और अगर उन्होंने बोला कि भाई एक्सटर्नल करो, एक्सटर्नल में क्या होगा, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. उनका जितना भी वेबसाइट है, सपोज एक्स के लिए आएगी, एक्स के लिए आएगी, यू कैन अप्लाई, जितना भी आपका सब डोमेन डोमेन जितना भी हो गया, हम लोग उनको टेस्टिंग करेंगे. करके देखेंगे कि जो एक्सटर्नल उनका जितना भी एक्सटर्नल एंड पब्लिक फेसिंग जितना भी उनका सिस्टम है, वो सिस्टम सिक्योर है या नहीं. यहाँ तक थ्योरी समझ में आया एवरीवन? ओके. सो यहाँ पे बैलवर्ड के बारे में थ्योरी लिखा हुआ है. तो अभी जैसे हमने एक्टिवेट किया, एक्सेस गेन किया, तो वल्नरेबिलिटी की बात भूल जाओ. ठीक है. क्योंकि अभी मॉडर्न जमाना है, तो मैक्सिमम चीजें सिक्योर मिलेगा. ऐसा नहीं कि बेसिक एचटीएमएल इंजेक्शन पता है इसको एनीवन? कोई भी किसी भी डॉ सेटअप पता है ना. तो बेसिक जो वर्नेबिलिटी है वो तुम्हें नहीं मिलेगा. ठीक है. तो तुमको अपना जो स्किल है उसको बढ़ाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आ जाता है बेसिकली रेटिंग में जो इनिशियल एक्सेस है वो हम लोग ज्यादा मतलब 99% केसेस फ्री सिनेरियो पे डिपेंड होता है. नाउ व्हाट इज फ्री सिनेरियो? फ्री सिनेरियो मतलब सपोज मैं किसी कंपनी का एक यूजर हूँ, तो जो रेटिंगर आएगा वो आके मेरे को टारगेट करेगा. क्या कर सकता है? फिशिंग मेल भेज सकता है. फिशिंग के बारे में पता है? You know? कोई भी एक एक्सप्लेन करो पार्टिसिपेशन. कौन करेगा? हाथ ऊपर करो. एक ही बंदा करता है. सही. और किसी को नहीं पता? किसी just like create a fake website, fake Instagram page, उसमें यूजर नेम आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना, अगर कर दिया तो हैकर के पास आ जाए. तो बेसिकली क्या है, इसका एक पार्ट है सोशल इंजीनियरिंग. तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है, जैसे कि मेरा कोई दोस्त है. ठीक है. सपोज सपोज मेरा कोई दोस्त है, मेरा क्लासमेट है. ठीक है. मेरे को पता है उसका पसंद का चीजें क्या क्या है. सपोज उसको आईफोन पसंद है. मैंने उसको एक यूआरएल भेज दिया. बहुत लोगों को व्हाट्सएप पे मिलता है, इस पे जाके क्लिक करो, इसको शेयर करो, 20 लोगों को, आपको एक आईफोन फ्री. ठीक है. मिला है ना सबको ऐसा. तो ये होता है फिशिंग का एकदम मतलब सबसे बेसिक स्टेप. ठीक है. ऐसे वेबसाइट पे जब जाके लोग अपना डेटा एंटर करते हैं तब होता है फिशिंग. ठीक है. तो अभी इसको कंपनी सिनेरियो में अगर देखेंगे, तो सपोज मैं डेटा एम्प्लॉय, तो मेरे पे पहले सोशल इंजीनियरिंग करेगा, हनी ट्रैप करेगा. हनी ट्रैप पता है? इसको पता है? हाथ पकड़. ठीक है. तो ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? कैन स्टॉप द रिकॉर्ड?
कर सकते हैं किसी भी तरह। या तो क्या हो सकता है कि सिस्टम में पहले से कोई वल्नरेबिलिटी है जो हमें अलाउ कर रहा है, सपोज वो लैपटॉप है, लैपटॉप को हैक करना है, ठीक है, मैंने उसको डिकॉन किया, डिकॉन करके मेरे को सपोज मिला कि उसमें एक वल्नरेबिलिटी है जो मेरे को उस लैपटॉप पे कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करने देगा, ठीक है। सपोज अगर कोई बेसिक स्क्रिप्ट पकड़ के चलो कि वो मेरे को एक सॉकेट सॉकेट पता है, इसको पता है हाथ पर सॉकेट सॉकेट, हाँ सॉकेट प्रोग्रामिंग सॉकेट पर चलो। हाँ जी। और कुछ, हाँ तो बेसिकली क्या है ये, सपोज प्लग का सॉकेट, हाँ हाँ वहाँ पे प्लग का सॉकेट है, वो ओपन है, वहाँ पे जाके कनेक्ट कर दिया तो मेरा सॉकेट कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही किसी कोड ने ओपन कर दिया वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे मेरा कोई भी कमांड चलाने का मेरे पास परमिशन है ऑलरेडी, तो मैंने उस पर कोई सॉकेट का प्रोग्राम रन किया जो एक सॉकेट ओपन करेगा, मैं जाके वहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसको समझ नहीं आया तो हाथ पर, सबको समझ में आया? ओके, तो सॉकेट पे जाके मैंने कनेक्ट किया। अभी यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। एक जो सिस्टम है, सिस्टम पे क्या हो सकता है, फायरवॉल, और क्या हो सकता है, एंटीवायरस, तीसरा क्या हो सकता है, एंडपॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है, तो इसको हमें एक एक करके बाईपास करना है। तो बाईपास करने का टेक्निक क्या होता है, अगर मैं सबको, हाँ आई दिख रहा है पीछे तक या फिर ऑन था, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे कोई मैलवेयर का, मैं यहाँ पे कोई मैलवेयर का कोड दिखाने नहीं वाला, बस कुछ बेसिक सा कोड लिखते हैं, जैसे हेलो, पाइथन का कोड है, बहुत बेसिक है। सपोज ये मेरा इनिशियल एक्शन देगा, ये वाला कमांड, ठीक है, सॉरी ये वाला कोड, तो ये वाला कोड हमें इनिशियल एक्शन देगा, हाँ किसका देगा, सिस्टम का देगा। तो अभी सिस्टम है, सिस्टम पे अगर हम लोग ये रन भी करेंगे तो क्या हमें एक्सेस मिलेगा डायरेक्टली, नहीं मिलेगा ना। किसी को अगर जाके अगर बेसमेंट को डायरेक्ट प्रपोज कर दो तो क्या होगा, जॉब का होगा, फ्रेंडशिप भी जाएगी, राइट। तो क्या करना है, जो वर्ड है आपका उसको ऑफर स्टेट करना है, ओके। ऑफर स्टेट कैसे करेंगे, सपोज देयर इज अ टूल, सब लोग गूगल करना, एमजी कर, ठीक है, एमजी कर, ये क्या है, ये वो लड़की का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। ये क्या बोलेगा हमको कि हाँ ये सेटिंग करवा दो, तो बेसिकली अगर हम लोग एमजी को रन करेंगे तो ये हमें बता देता है ये जो कोड है, ये कोड के कौन सा पार्ट की वजह से हमें डिफेंडर दिखाएगा कि भाई ये मैलवेयर है, ठीक है। हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं,
जैसे कि प्रिंट हेलो सपोज सॉकेट मैं बस स्यूडो कोड लिख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे सॉकेट डॉट सॉकेट यहाँ पे मेरा आईपी है यहाँ पे पोर्ट है और सपोज यहाँ पे कनेक्ट करके एक फंक्शन ठीक है। अभी एमसीडी ने क्या बोला कि सपोज बेसमेंट ने क्या बोला भाई तो पागल है ठीक है इसके लिए नहीं होगा तो एमसीडी का क्या बोलेगा भाई ये जो पार्ट है ना ये पार्ट की वजह से डिफेंडर बोल रहा है कि ये मैलवेयर तो इसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा उसकी केयर करना पड़ेगा ओके। तो इसके लिए सपोज यहाँ पे अभी आता है कोडिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है। अच्छा किसको किसको लगता है साइबर सिक्योरिटी के लिए कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब अच्छा और किसको किसको लगता है कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है और जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला उनको क्या लगता है यस दे आर राइट एक्चुअली दोनों मतलब जैसे कि हमको कोडिंग इतना जानना होता है कि सपोज देयर अ कोड सपोज 200-300 लाइन का कोड है हमें वो समझ में आए हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ऐसा नहीं कि भाई कुछ क्या एक्टिविटी बिल्ड कर देता है ऐसा वैसा डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है बस जानना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा जानना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता चल गया कि ये जो लाइन की वजह से हमारा जो डिफेंडर है वो बोल रहा है कि भाई ये मैनुअल है तो अभी यहाँ पे हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे मॉडिफाई करना है ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सपोज ये वाला जो पार्ट है मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये काम करेगा ठीक है? तो हम लोग इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं ये उठा लिया सपोज इसलिए वेरिएबल के अंदर इसको सेव कर दिया सपोज डॉलर इक्वल्स टू दिस वन ठीक है। अभी अभी उसके बाद मैंने क्या किया सपोज सपोज एक काम करते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है इसको उल्टा करके लिख देते हैं ठीक है जैसे कि टी आर कोलन टी आर तो अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा आईपी कोलन कोड राइट समझ में आ रहा है कोई दिक्कत तो डॉलर थ्री में मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया हाँ उसके बाद क्या किया सपोज डॉलर टी वन इक्वल्स टू सपोज रिवर्स ऑफ डॉलर टी ठीक है इधर मैंने पूछा गया डॉलर टी वन तो एक बहुत सिंपल सा मैंने ऑपरेशन टेक्निक दिखा कैसे क्या होगा कि ऐसे जो एंटीवायरस वायरस है वो कंफ्यूज हो जाएगा सिग्नेचर डिटेक्शन अच्छा सिग्नेचर डिटेक्शन क्या है मतलब ओके सो सपोज मैलवेयर है ठीक है मैलवेयर को कोई भी एंटीवायरस दो तरह से डिटेक्ट करता है ठीक है एक है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन और दूसरा बिहेवियरल एनालिसिस ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ ये वेबसाइट के बारे में किसने उसको बताया तो ये बहुत वेबसाइट है वहाँ अच्छा किसने एंटीवायरस को खरीद कर रखा है आप लोग किसी ने नहीं परचेस किया इंस्टॉल कर दीजिए अरे बहुत लोग हैं जिन्होंने परचेस किया तो बेसिकली ये वेबसाइट है यहाँ पे जाके अगर कोई भी फाइल हम लोग अपलोड करेंगे भाई तो ये इसका सिग्नेचर एनालिसिस करेगा आप यहाँ पे कंफर्म अपलोड
So ये almost 58 to 60 different activators का चेक करेगा, करके बताएगा कि ये वाला जो फाइल है ये कोई मैलवेयर या वायरस है नहीं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल एक पिक्चर था, तो ये सभी में ऑलमोस्ट आर्किटेक्चरली है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या कर सकते हो, लाइक यू कैन चेक अ फाइल ऑल्सो। मैंने तो बताया फिशिंग वेबसाइट, यहाँ पे आके उसके यूआरएल दे दो, ये बता देगा कि वेबसाइट सेफ है या कुछ गलत हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है वो, लाइक पता लगाने के लिए कि मतलब डिफेंडर का एविएशन करते हैं। मतलब बेसिकली तो बाइपास करने के लिए ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो हम लोग अपना बैनर बनाते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है जरा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूआरएल फाइल कुछ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई मैलवेयर बना रहे हैं क्या हमें इस पर अपलोड करना चाहिए, कोई बताएगा मेरे को? नहीं, अच्छा बताओ सब क्यों नहीं करना चाहिए, कोई बताओ। हाँ हम तो बाईपास कर देते हैं ना, क्या हमें इसको अपलोड करके चेक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका वायरस नहीं। मतलब कोई भी वेबसाइट में मैलवेयर अटैक हो सकता है। अगर जिस वेबसाइट में आप बाईपास कर रहे हैं उसमें भी मैलवेयर अटैक कर सकता है। ये वेबसाइट बना है इसके लिए कि ये इसके लिए क्या करेगा, 50 से 60 जो भी एंटीवायरस है वो जस्ट वो फाइल को स्कैन करके देखिए, ये हमें बताएगा कि वो फाइल सेफ है कि मैलिशियस। इतना था क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई भी बाईपास करके कुछ भी मैलवेयर बना रहा हो तो क्या हमें इसको अपलोड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं बताओ। बोलते करना सपोज इसने नहीं बोला, इसको बाईपास कर दिया हमने, ठीक है। Yes. পুরে আমার এলো, আবার ওটাকে চেঞ্জ করতে হবে। तो बेसिकली এখানে अच्छा अगर यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे तो ये बेसिकली वो जो फाइल में बना रहे हैं उसका भी हैश शूट कर लेंगे, तो वो मैलवेयर भी आई थिंक कुछ वीडियोस में वो भी मतलब डिटेक्टेबल हुई है। शायद वो अभी अनडिटेक्टेबल है, लेकिन कुछ वीडियोस बाद वो फिर से डिटेक्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका?
यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है जो मैंने अभी प्रैक्टिकली लिखा है कि एमसी कैसे बाईपास करना है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया एमसी बाईपास। बिहेवियरल बाईपास कैसे करेंगे? अच्छा, व्हाट इज बिहेवियर डिटेक्शन? नाम सुन के क्या लगता है? बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन क्या हो सकता है? मेंबर कैसे एक्ट करता है उसको यस, करेक्ट। तो बेसिकली एक फाइल आया, वो क्या करता है, उसको कहीं पे सैंडबॉक्स पे उसको रन कराता है, ठीक है। करके देखता है कि वो जो फाइल है वो बहुत कुछ चेक होता है, जैसे कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोड क्या है, उसका कनेक्शन कहाँ जा रहा है, ये सब, ठीक है। कोई बता सकता है? मैंने अभी तक जितना भी बोला इसके ऊपर बेस करके कोई बता सकता है कि बिहेवियर डिटेक्शन को बाईपास करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? Anyone? ओके, तो यहाँ पे दो तरीका है। तरीका नंबर एक, फोन करके बोलो सर आपका क्रेडिट कार्ड का वो OTP दे दीजिए मेरे को, ठीक है। बट हम ये नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सपोज तुमने एक पैनल बना है, अपने दोस्त को डिलीवर कैसे करोगे? कोई भी आइडिया दो यार। फिशिंग लिंक, ईमेल में पीडीएफ भेजेंगे, पर उसको डाउनलोड हम क्या कर सकते हैं? इमेज इंस्टाग्राम पे रील का लिंक इससे एंड्रॉइड ऐप होगा। है, इमेज को पूरा सपोज मैं एक इमेज को व्हाट्सएप पर भेज दिया, क्या उससे एक एंड्रॉइड फोन लगता है? हम लोग बात करें। इसको लगता है नहीं हो सकता। बाकी को क्या लगता है भाई? हम लोग के नाम से उठा रहा है। ये चीज को किसको लगता है वो बताओ, हाथ उठाओ। बहुत मुश्किल, तो पॉसिबल नहीं है। और जिसको जिसको लगता है नहीं हो सकता वो करेक्ट है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंड्रॉइड डिवाइस नहीं हो सकता। व्हाट्सएप पे जस्ट इमेज दे दिया, ऐप हो गया, पॉसिबल नहीं है। आईफोन हो सकता है? किसको किसको लगता है कि नहीं हो सकता? किसको किसको लगता है हो सकता है? तो आईफोन ज्यादा सिक्योर है कि एंड्रॉइड ज्यादा सिक्योर है? खुद का अपना अपना तो देयर इज अ vulnerability in iOS। तो बेसिकली एक इमेज को अगर आई मैसेज पता है ना सबको, मैसेज एप्लीकेशन एप्पल, तो आई मैसेज में अगर कोई भी इमेज आ गया, ठीक है, डजंट मैटर तुमने उसको खोल के देखा, उसमें क्लिक किया, वो हैक हो जाएगा automatically। जीरो क्लिक बोलते हैं, जीरो क्लिक क्या है थोड़ी देर बाद मैं उसे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ वो लिखा हुआ है कैसे वो डिटेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। हो गया? अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं डिफेंडर को बाईपास करके दिखाऊंगा, ठीक है। इधर नहीं ये हमरा बिल्कुल सिलेक्ट अच्छा, ये जब तक ऑन हो रहा है कुछ बेसिक जल्दी रेक्टिफाई कर लेते हैं। इंटरसेप्ट कंसोल पता है या नहीं? हाथ उठाओ, को नहीं पता? इंटरसेप्ट कंसोल है बेसिकली, पता है? तो इंटरसेप्ट कंसोल क्या है कि उसके अंदर
अच्छा सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी में प्रोग्रामिंग तो वो है सिंपल समझ लो एक एप्लीकेशन है स्क्रिप्ट है कुछ भी है उसके अंदर बहुत सारा मेन्यू है जिसमें बहुत सारा एक्सप्लॉइट है ठीक है वो एक्सप्लॉइट को रन करता है हैंडल करता है सब कुछ करता है ठीक है वो इसके लिए कलेक्शन उसके अंदर स्कैनर से एक्सप्लॉइट ठीक है समझ में आया इतना माइंड बताओ यार शर्मा मत वो जो जो आता है वो बताओ भाई तो nmath एक बेसिकली बाइनरी है तो जैसे कि मेरा कोई नेटवर्क है सपोज किसी का आईपी एड्रेस मिला तो आईपी एड्रेस को तो डायरेक्टली हैक नहीं कर सकते तो उसको स्कैन करना होता है एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि लोग देखते हैं उसमें वल्नरेबिलिटी है नहीं है कोई सर्विस कौन सा सर्विस चल रहा है कौन सा क्या चल रहा है राइट तो वो जो स्कैन करते हैं उसके लिए जो टूलिंग होता है दैट इज कॉल्ड nmath एंड रिसर्च ओके क्लियर एवरीवन ओके तो अभी हम लोग विंडोज 11 का लेटेस्ट जो डिफेंडर है उसको बाईपास करेंगे कोई भी डिटेक्शन नहीं आएगा लेट्स डू इट ओके सो पहले हम चीजें देख लेते हैं दैट इज विंडोज सिक्योरिटी अच्छा ये तो बता ना क्या है मैं यहाँ पे you can see, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है यहाँ पे पूरा एंटीवायरस ऑन है ठीक है इसको ब्लॉक करके चलता है क्यों थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ लेकिन क्यों ये ऑप्शन को बंद करके रखा है Anyone? তাহলে আমি যদি শুরু করে ডিপেন্ডেন্ট অফ করি তাহলে আমার ম্যানুয়ালি কি না এই অপশনটা আমি কেন অফ করেছি টেস্টিং এনভায়রনমেন্ট एक्चुअली टेस्टिंग एनवायरनमेंट ये विंडोज पर पूरे हम ये विंडोज ऊपर में बेसिकली अपना मैलवेयर टेस्ट करते हो সিস্টেমে যদি আমি ইনজেক্ট করি ম্যালওয়্যারটা ডিফেন্ডারকে ইনজেক্ট না করতে দিতে পারি ওটাই তো বাইপাস করে দাও কিন্তু এইভাবে টেস্টিং এর জন্য মানে যে এনভায়রনমেন্টে আমি টেস্ট করি সেই এনভায়রনমেন্টে আমি একটা পার্টিকুলার অপশন অটোমেটিক স্যাম্পল সাবমিশন নামের মধ্যে অ্যান্সার আছে এটাকে আমি বন্ধ করে রেখেছি ডিসেবল করে রেখেছি কেন আবার খেয়ে নেবে মানুষ एग्जैक्टली तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की करे वो जगह बोलते माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि सपोज आप रनिंग फाइल ठीक है अभी क्या है ज्यादातर लोग क्या है कि नॉर्मल मैलवेयर बनाते हैं उसका पैसा नहीं है हमारे पास हमारे पास तो हम लोगों का उसका इंफ्रा उसका वेबसाइट बहुत लंबा प्रोसेस तो फाइलें वो कहीं ना कहीं अगर तो तो हाँ, तो जो फाइल है वो कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस होता ही होता है विंडोज डिटेक्ट ना करे लेकिन कहीं उसको जो अननोन फाइल है ये उसको लेके क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट के लैब में भेजता है वहां पे उसका उससे एक और टेस्टिंग तो शायद कोई बंदा बैक नहीं कर सकता उसको तो पता चली जाए हाँ कि ये मैलवेयर है
तो उसने जो मेहनत से मैलवेयर बनाया वो 2 दिन बाद डिलीट कर दिया खत्म। तो इसके लिए अगर आप अपना कितना मैलवेयर बना रहे हो ऑलवेज टर्न दिस ऑप्शन ऑफ, ठीक है, टॉगल करो, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद दिखा देता हूँ यूजुअल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर ऐड करके रखे हैं मैलवेयर को रखने के, ये अपना डेस्कटॉप ना, बट मतलब इस मैलवेयर को ये जो फोल्डर है इस फोल्डर के बाहर रख देना, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नोट्स C2 पता है किसको किसको? एनीवन? अच्छा, तो C2 मतलब है CC, ठीक है, 2 C। एक C का मतलब है कमांड, दूसरे C का नाम है कंट्रोल। तो कमांड भेजना है, कंट्रोल करना है। सॉकेट प्रोग्रामिंग से किया। अच्छा, तो वहां पे होता है ना कि जैसे हम लोग, मैं कोड लिख सकता हूँ। सपोज एक मैलवेयर है, तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखा दी, ये कोड किसको समझ में आया? 2 लाइन का कोड लिखा है, बेसिक, शायद सिंटैक्स भी सही नहीं है, इसको इसको समझ में आया। तो मैंने बेसिकली एक वेरिएबल लिया है और बताया अगर मैसेज, मतलब जो हमारा क्लाइंट है, ऐसा दूसरा कोड भी लेते हैं, ये जो पर्टिकुलर कोड है ये मेरा चलेगा कितने डिवाइस है, और अटैकर डिवाइस पे शायद ये है जैसे कि कनेक्ट, सपोज, तो ये जो ऊपर वाला कोड है ये चलेगा अपने विक्टिम डिवाइस पे, नीचे वाला जो कोड है वो भेजेगा हमारा अटैकर। अटैकर ने अगर एमएलसी की जगह पे एमएलसी भेजा तो क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट होगा। अगर एमएलसी को एमएलसी मतलब मुझे एसएमएस करके स्टेट कर दो, क्या हो रहा है बाद में बताओ। यहाँ पे सपोज उसने लिख दिया क्या है, तो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट कर गया। ये भी है कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, पास टू एसएमएस मतलब जो विक्टिम डिवाइस है, जैसे कि तुम्हारे फोन पे एसएमएस जो आता है वो कहीं पे स्टोर होता है, राइट। वो क्या करता है, जैसे ही वो एक एमएलसी कमेंट को मतलब करेगा, वो सिंपली उस फाइल को इस अटैकर को सेंड कर देगा। गॉट इट एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? सो ये भी है, बहुत बेसिक चीज है एंड बेसिक कंसेप्ट है ठीक है। अभी यहाँ पे बाईपास करने के लिए बहुत कुछ आता है, जैसे एक्सेल लिखना पड़ता है एंड बहुत कुछ, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बाईपास करते हैं। पहले डिस्क्लेमर बिल्कुल
the invisible trespasser that now lurks in the depths of its computer. The drone, having accomplished its mission, flies back to its master, leaving behind a trail of digital breadcrumbs. The hacker, somewhere hidden in the shadows of the cyber world, now has full access to the man's computer. This is not a scene from a science fiction movie. This is the reality of cybercrime, a threat that is as real as it is invisible. A world where hackers manipulate technology to their advantage, using unsuspecting devices and innocent people as their pawns. In this incident, the drone was the hacker's tool, the unsuspecting man his victim. The malware was the weapon, and the man's computer the battlefield. The hacker now had full control over the man's computer, access to his personal and professional information, his digital identity. The key points to remember here are: the hacker used a drone to install malware into the man's computer. The man was completely unaware of the cyber attack. The hacker gained full access to the man's computer, including all his personal and professional information. In the face of such threats, we must remain vigilant, aware of the potential dangers that lurk. बताओ क्या बोला है? समझ में आया इसको? मैं किससे समझ में आया होगा ना क्या किया? किसको समझ में आया? उसे explain अरे की माने क्या लगा? Basically, format the particular area that we are capturing. And are at a distance, the distance আমি যখন ফোন যদি আমি চাই সেক্ষেত্রে আমার কানেকশন মানে হ্যান্ডশেক ফাইলটা এক্সচেঞ্জ ফাইলটার আপনার সাথে পাসওয়ার্ড ঠিক ওখানে কানেকশন করার জন্য হ্যাকার কি করছে একটা সামথিং একটা ড্রোন সাপ্লাই করছে তার জন্য একটা কানেকশন কারণ যত ট্রেনটা বাড়বে কানেকশনের জন্য ওটা আরো উইক যতটা কাছে আসবে কানেকশনটা আরো So basically এখানে এটা হচ্ছে तो एक ये particular attack का जो attack यहाँ पे दिखाया गया है this is basically mouse jacking attack mouse jacking क्या है so this is the cheat मैं एक example दे रहा हूँ ये मतलब ये जो particular cheat है NRF 824L01 plus ठीक है ये particular cheat vulnerable है ऐसे vulnerable बहुत सारे cheat हो सकता है लेकिन मेरे को इसके बारे में पता है तो ये जो चीज है बहुत सारे माउस यूज करता है लॉजिटेक हो गया टेल हो गया बहुत सारे जितने भी वायरलेस माउस है जो भी लाइक 1000 2000 में मिलता है 99% यही वाला चीज ओके बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ये वल्नरेबल कब होता है तो बेसिकली एक वायरलेस माउस कैसे काम करता है किसी को पता है कि वायरलेस माउस कैसे काम करता है बेसिकली एडाप्टर होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज तो অ্যাডাপ্টারটা আমাদের যে ডিভাইস আছে পিসি ডিভাইস তাতে ওখানে থাকে আর এদিকে আমাদের মাউসটা থাকে तो बेसिकली यूएसबी एडाप्टर माउस से सिग्नल लेता है और वो जो सिग्नल है वो लैपटॉप को देता है बेसिकली एक्चुअली लैपटॉप के साथ कनेक्टेड कौन यूएसबी एडाप्टर कम्युनिकेट करता है किसके साथ माउस के साथ तो कम्युनिकेट करता है बेसिकली कमांड एग्जीक्यूट कौन करता है यूएसबी एडाप्टर लैपटॉप में राइट समझ में आ रहा है माउस को नहीं करता ना माउस वायरलेस सिग्नल भेजता है तो ये जो पर्टिकुलर चिप है ये वाईफाई का यूज करता है जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज अभी क्या हुआ मैन इन द मिलियन किसको पता তো বেসিক্যালি এখানে কি হচ্ছে এবার আমি স্টার্টিং से जो बोला सबको कंबाइन कर दूंगा ठीक है वाईफाई सॉरी माउस का जो मैक आईडी है मैक आईडी को स्पूफ करेंगे मैक आईडी कैसे पता चलेगा डिफाइन करेंगे ठीक है मैक आईडी को मैंने कर लिया स्पूफ करने के बाद मेरे को फ्रीक्वेंसी मालूम है 2.4 गीगाहर्ट्ज तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वो मैक आईडी को यूज करके अगर मैं सेम सिग्नल ये सिग्नल से जो वो एनआरएफ एल जो था वो चीप यूज कर रहा है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि
अगर से आ रहा है कि माउस से आ रहा है या कोई हैकर भेजे तो तब क्या होगा कि हैकर आके ये तो पर्टिकुलर कनेक्शन है, कनेक्शन को डिलॉक करेगा, कट करेगा, कट करने के बाद ये अपना ओन सिग्नल भेजेगा। ओन सिग्नल भेजेगा तो क्या होगा, हमारे उसका माउस का एक्सेस आ गया, माउस का एच आई डी अटैक होता है, एच आई डी बेसिकली ठीक है। तो उस तो बेसिकली कीबोर्ड कैसे होता है, कीबोर्ड सिग्नल, माउस सिग्नल, उससे हम लिंक करके कुछ भी वहां पर रन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या रन करेंगे, जो अभी मैंने है उस मैलवेयर को इसके साथ इंस्टॉल करवा देंगे। तो मेरे को उस लैपटॉप को टच करने की जरूरत नहीं है, उसमें मैलवेयर इंस्टॉल हो गया। गॉट इट एवरीवन? तो ऐसे ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जीरो क्लिक का। तो ऐसे ही बेसिकली जीरो क्लिक मैलवेयर काम करता है। এটা কোনো মানে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আছে, মানে হয়েছে এরকম কিছু আছে? একটা তো বিশাল বড় সিকিউরিটি ফল। ধর তুই এখন তো বলতে গেলে সবার কাছে ড্রোন আছে এবং সব আছে চাইনিজ থেকে, যে যেখানে পাচ্ছে উড়িয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে যে অলরেডি এটা ইনস্টলড নেই, যে চায়নার যেহেতু কথা হচ্ছে, চায়না যে অলরেডি অ্যাটাক করছে না তার কি মানে? তো মানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে পড়া হচ্ছে এরকম ভাবে ওরা দেন না, ওরা বলে পসিবল নয়, ওই জন্য এটার নাম ছিল আর এই পার্টিকুলার এই যে পার্টিকুলার সিস্টেম সেটাকে এক্সাম্পল দিলাম, এটা অলরেডি ফাউন্ড। সেই সিকিউরিটি গুগলে সার্চ করো এই পার্টিকুলার সিস্টেम, इसको अगर गूगल में सर्च करते तो ये दिखाएगा कि vulnerable है, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने चीज vulnerable है हमें उसको पता लगा। आई कैन कमेंट। तो ये एक बेसिक मॉडल है, इसको कोई अपने प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये जो पर्टिकुलर जो सिग्नल भेजेंगे, जो भी है सिग्नल बोलो या कुछ भी जो भी इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। उसके लिए रास्पबेरी पाई लगा लेंगे, रास्पबेरी पाई के साथ एक एंटेना लगा लेंगे और एक यूएसबी एक पीएचडी वीडियो क्लियर करके बेसिकली जो अटैक बोला माउस जैकिंग करके इसका पिक्चर ले लेंगे। तो माउस जैकिंग का जो भी अटैक होता है ये एडेप्टर से पॉसिबल और सबको कनेक्ट करते हैं इंस्टा बैटरी से और बोर्ड को ऊपर रख के उड़ा दो, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ठीक है फिर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। Would request Lisa to come forward and give a token of thanks to Anubhab from our behalf for this amazing session. अरे आपको स्टोरेज ही नहीं ভিডিওটা দে, ভিডিওগুলো তুই ড্রাইভে আপলোড করে দিবি। কি তোমার লোকেশন নাকি নরমাল? নরমাল ছবি তুলেছিস তো? अरे I don't know. Fourth semester, I think maximum of your fourth semester students, right? So fourth semester students, you have got a flavor of cyber security.
Okay. No more active. Login conflict, everyone. Ready? Okay, good. Every question has a specific time when it comes. You need fast come faster. So player लगेगा वो winner. Player will 50. Player will 15 question. Each question has separate time. Okay. Time में देना पड़ेगा. We take 3 winners. Okay.